Now we'll talk about section 13.8. हमने क्रेमर्स रूल का थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन इसमें पढ़ना है। क्रेमर्स रूल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड क्रेमर्स रूल, बट नाउ आई वांट टू डू अ जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ द क्रेमर्स रूल. सो व्हाट द क्वेश्चन गोज अहेड एंड सेज, एक बार क्वेश्चन देखो, देन आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट. सो क्वेश्चन बोलता है px प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x minus y plus z is equal to 0, 2y minus z is equal to 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. p10, 1 minus 1 1, 0 2 minus 1, x y z is equal to 1 0 3. तो अब वी नो कि ax is equal to b, तो x will be a inverse b. सो नंबर वन, क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have solution. For what value of p system of equation will have solution? तो बहुत सिंपल है बेटा. The system of equation will have solution as long as determinant of a is non-zero. मतलब it has to be a non-singular matrix. तो अगर हम इस matrix A का determinant निकालते हैं, we will get p minus 1 into minus 1, 1 minus 2 minus 1, minus 1 into 0 minus 1 plus 0. So p into minus 1 plus 1, that means 1 minus p. And I want that the determinant should not be equal to 0, मतलब 1 should not be equal to p. तो as long as p takes any value other than 1, अगर p का value 1 के अलावा कुछ भी है, then we can go ahead and we can say that the system of equations have a solution. System of equation का solution exist करेगा if p takes any value other than 1. अब क्वेश्चन आता है कि what will be x, y and z. तो there are two methods. या तो आप a का इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर इसमें क्रेमर्स रूल लगा लो. एंड व्हाट विल बी क्रेमर्स रूल? वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा क्रेमर्स रूल के थ्रू? डिटरमिनेंट ऑफ 103, मतलब फर्स्ट कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस 1 minus 1 2 0 1 minus 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ p 10 1 minus 1 2 0 1 minus 1. इसका डिटरमिनेंट आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट. It was coming 1 minus p. And iska determinant will be 1. 1 minus 2 minus 1 minus 1. 0 minus 3 minus 3 plus 0. So this will be 1 plus 3 4 upon 1 minus p. Sorry, minus 1 minus 1 plus 3. 3 minus 1 2 अपॉन 1 माइनस पी. ये इसका x का वैल्यू हो जाएगा. सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो अगर हमें y निकालना है तो यू विल रिप्लेस द सेकेंड कॉलम विद दिस. ये हो जाएगा p10 103 0 1 minus 1 अपॉन द डिटरमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, जिसका वैल्यू वी फाउंड एज 1 minus p. सो दिस विल बी p 0 minus 3 minus 3 minus 1 minus 1 minus 0 minus 1 plus 0. So this is going to be minus 3p plus 1 upon 1 minus p. So 1 minus 3p upon 1 minus p. This will be the value of your y. अगर z निकालना है तो you will replace the third column with this. I am leaving it to you. You will get the value of z as minus 1 minus 3p upon 1 minus p. So XYZ can be found out using Cramer's rule, but whether the solution will exist or not, उसके लिए requirement है that the matrix has to be a non-singular matrix. Now we can talk about something which is called as homogeneous system of equations.
अब जब हम होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं, whenever we talk about homogeneous system of equations, तो दो तरीके के सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं. One is called as trivial and one is called as non-trivial. एक ट्रिवियल सॉल्यूशन अंडर होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो होता है. सो व्हाट इज अ होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन? फर्स्ट, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो होती हैं such that ax is equal to 0. So the right hand side is always 0. मतलब for example अगर मैं बोलूं 4x plus 3y is 0, 2x plus y equal to 0, तो these are homogeneous system of equations क्योंकि इनका right hand side 0 है. Now if their right hand side is 0, if they are homogeneous system of equation, तो दो चीजें हो सकती हैं, that you can have a trivial solution or you can have a non-trivial solution. Trivial solution का meaning है that x and y are both 0. और इसको आप इजीली यहीं से देख सकते हो बेटा. इफ यू जस्ट गो अहेड एंड इफ यू नोटिस कि इफ द सम ऑफ टू थिंग्स इज 0, तो सम ऑफ 0 एंड 0 तो 0 होता ही है ना. सो इट मीन्स इट इज डेफिनेटली पॉसिबल दैट बोथ एक्स एंड वाई आर 0. अगर एक्स और वाई 0 है तो इट विल एनीवेज सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. डोंट यू थिंक? देखो 4 into 0 plus 3 into 0 equal to 0, 2 into 0 plus 0 equal to 0. So x and y equal to 0 will always solve homogeneous system of equation. अगर right hand side 0 है तो आप x और y को 0 plug in करो and it should always give you an answer. That is called as trivial equations. The other one that we have, that is basically called as non-trivial equation. Non-trivial equation का meaning ये है, non-trivial solution का meaning ये है that there is something other than x y equal to 0 जो इन system of equations को solve करता है. Now suppose if I have कि ax plus by equal to 0, cx plus dy equal to 0, और मैं आपको बोल रही हूँ कि x and y equal to 0 तो है ही, but there is some other x and y also which can solve. Right, there is some other x and y which can solve. Non-trivial solution भी exist करता है. So non-trivial solution exist करने के लिए, for us to have a non-trivial solution, हमें क्या चाहिए होगा? What will we be requiring in this case? Just think about it. तो अगर non-trivial solution exist करता है तो x और y का कुछ और value होगा ना, which will solve these system of equations, isn't it? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. सो इफ आई टेल यू 2x plus y equal to 0 and x plus 2y equal to 0, सपोज मैं आपको ये बोल देती हूँ एंड आई टेल यू कि x equal to 1, y equal to -2 is solving this. पहले एक ही इक्वेशन के साथ करके दिखाते हैं. x equal to 1 and y equal to -2 is solving it. So you can see कि 2 - 2 0 आ रहा है आपको, एंड x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -4 भी इसको सॉल्व कर रहे हैं. x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -6 भी इसको सॉल्व कर रहे हैं. सो दीज आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस. x एंड y को हमें 0 प्लग इन करने का जरूरत नहीं हुआ, बट इट इज स्टिल सॉल्विंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. राइट नाउ, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए, फॉर अस टू हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, वी नोटिस दैट नॉन ट्रिवियलिटी में दो चीजें आती हैं विच वी विल स्टडी विद टाइम. One is said to be infinite solutions. One is, किसी भी इक्वेशन में तीन तरीके के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, एंड फॉर इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन मैट्रिक्स का सिंगुलर होने पे ये होता है. Now, when we talk about homogeneous system of equations, तो homogeneous system of equation में x equal to y equal to 0 तो always true हो गई. This will always solve these. क्योंकि अगर right hand side 0 है, the right hand side is 0, आप left hand side में x y को 0 plug in करो and you will get the answer. तो if the right hand side is 0, left hand side को 0 can always solve. So this is not possible that there will be no solution.
एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, दैट x and y are 0. This will always exist. So now the question is that is there only one or more than one? So if there are infinite solutions, मतलब xy का 0 के अलावा भी कोई वैल्यू है that solves this system of equation, तो for that we require the matrix to be a singular matrix. उसके लिए हमारा जो matrix हो जाता है वो एक singular matrix होता है, right? It's a singular matrix. So write down a question. क्वेश्चन है 5x plus 2y plus z is equal to lambda x. 2x plus y is equal to lambda y. X plus z is equal to lambda z. And the question says that find lambda for non-trivial solution. Non-trivial solution. तो देखो जरा ध्यान से देखो, हाँ. So when you will create the determinant matrix of this, आएगा 5 minus lambda 2 1, 2 1 minus lambda 0 1 0 1 minus lambda. I'm just writing the coefficients of x, y, and z, right? So the coefficient of x, y, and z will be 5 minus lambda 2 1, 2 1 minus lambda 0, and 1 0 and 1 minus lambda. Now I'm leaving it for you to find the determinant. There is nothing very big that you have to do. तो जब आप इसका determinant निकालोगे, you will get a cubic form, एक cubic equation आएगा. So that will be lambda into 1 minus lambda into 6 minus lambda. ऐसे करके एक cubic equation बनेगा. ठीक है? When you will find the determinant of A, you will get a cubic equation. You put this to 0 and you'll get three values of lambda. Lambda equal to 0, lambda equal to 1, lambda equal to 6. So it means that these are these three values at which this matrix becomes a singular matrix. इसका determinant 0 हो जाता है. And singular matrix automatically means that there will be infinite solutions in this case. Okay? ठीक है बेटा, thank you.